Welcome back to Codage VIT, and this is today's Vpropel question: missing operators. It's an easy question. It's a very easy question, but still only 20 or 21 submissions have been done. मैं बार बार एक ही चीज बोल के थक गया हूँ, but still कोई बात नहीं, छोड़ो. Missing operators. See, the thing is, एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द ऑपरेटर्स वेर मिसिंग. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को ट्रांसमिट किया जा रहा था, बट द ऑपरेटर्स वेर मिसिंग. ओके, एंड ओनली ऑपरेंड्स वेर रिसीव्ड एट द other end. It is known that the arithmetic expression consists of only two operators, plus and minus, and the operands were two digits or one digit numbers. See, they have basically tried to make things easier for us. उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसमिशन किया एक arithmetic expression का, बट ट्रांसमिशन में कुछ गलती थी, जिसकी वजह से बस ऑपरेंड्स के, देखो ये सारे ऑपरेंड्स हैं, नंबर्स बस ट्रांसमिट हुए हैं, और ये जो नंबर्स हैं, दे आर आइदर वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर्स, एंड मोर ओवर दे विल बी ओनली हैविंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद देम. ठीक है. सो द थिंग इज द इवैल्यूएटेड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन. ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारा एक्सप्रेशन है और इसकी इवैल्यूएटेड वैल्यू हमें बता रखी है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू डिजिट और वन डिजिट नंबर टू गेट दिस. दैट इज ओनली व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है. और यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि जो साइज है ना, साइज 1 2 3 4 5 नंबर्स, ये भी फिक्स रहेगा. ओके, यू विल बी ओनली हैविंग 5 नंबर्स. अमंग दिस 5 नंबर्स वी हैव टू डिजिट नंबर एंड वन डिजिट नंबर. ठीक है, जैसे कि देखो आइदर 8 कैन बी द वन डिजिट नंबर एंड 79 एंड 89 कैन बी द टू डिजिट नंबर, और 87 कैन बी अ टू डिजिट नंबर, 9 कैन बी वन डिजिट नंबर, 89 कैन बी टू डिजिट नंबर, or 87 can be two digit number, 98 can be two digit number, and 9 can be one digit number. Okay, this is how we can make the combinations from the given numbers, and then we have to either do addition or subtraction to get this expected evaluated value. Okay, तो देखो अगर मैं नोट पैड में बताऊं तो हमारे पास पता है कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस है. वी कैन आइदर गो फॉर प्लस प्लस, और वी कैन गो फॉर प्लस माइनस, और वी कैन गो फॉर माइनस प्लस, और वी कैन गो फॉर माइनस माइनस. ठीक है, हियर विल बी हैविंग एनी नंबर. ठीक है, सपोज एक्स वाई एंड जेड. ओके, तीन नंबर होंगे हमारे पास. नाउ एक्स कैन बी आइदर वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर, वाई कैन बी आइदर वन डिजिट और टू डिजिट. ठीक है, जेड कैन बी आइदर वन डिजिट और टू डिजिट. ठीक है, हमें इतना पता है कि वी आर हैविंग ओनली टू डिजिट नंबर्स एंड वन डिजिट नंबर. सो लेट्स move on to the code. See, first of all I have to take the value of s. Let me take it in format of a string. Now see, value of v. Now once this is done, so let me make a list. क्योंकि देखो मेरे को पहले से ही पता है कि what type of numbers I'm going to have. ठीक है, either I can have 8, 79, 89 as the numbers, or I can have 87, 9 and 89 as the numbers, or I can have 87, 98 or 9 as the number. तो मेरे को पहले से मेरे combinations पता है. So see what I'll be doing. int s0. ठीक है, similarly int s1 colon 3, similarly int s colon 3 to the end. देखो ये समझ में, मैंने यहाँ पे देखो पहले मैंने पहले नंबर को ले लिया. ठीक है, फिर जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं बताऊँ तो देखो सपोज आई हैव नंबर 8 6 7 9 8, दिस माय नंबर. तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया, इसके बाद इसको सेपरेट किया. मैंने ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना दिया विच आई एम स्टोरिंग इनसाइड दिस, इनसाइड टू डायमेंशनल लिस्ट. ठीक है, समझ में आ गया. सिमिलरली int s colon 2, int s colon 2, int s 3 colon to the end. ठीक है, so over here also I'm doing the same thing. Over here now you know what is the combination which I made. Let me show you. See, मैंने नंबर्स को इस तरीके से सेपरेट कर दिया. This is how I separate the numbers. ठीक है, similarly int colon 2, int s 2 colon 4, int s का 4. इस बार मैंने पता है कैसे सेपरेशन किया, मैं बताता हूँ. इस बार देखो दिस इज व्हाट आई हैव डन. ठीक है, सो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे मेरे सारे नंबर्स बना लिए हैं. ठीक है, जो मेरा यूज लिस्ट है, लेट मी शो यू. यूज लिस्ट is having, let me show you what is use list having with it. 8 67 98, then it is having with it 86 7 98, and then it is having 86 79 and 8.
So this is what my use list is having with it. ठीक है, मेरे पास मेरा पूरा combination मिल गया. Now once I have got this, see what I'll be doing. For I in use list, if I का 0 plus I का 1 plus I का 2 is equals to V. ठीक है, सी देखो हमें बेसिकली 2-3 ऑपरेशंस चेक करने. आइदर I have to check for plus plus, then I have to check for plus minus, then I have to check for minus plus, then I have to check for minus minus. Okay, so say print str I का 0 plus str I का 1 plus str I का 2 and then break. So this is what I'll be doing. Okay, elif control C control V. देखो प्लस प्लस कर लिया मैंने, अब यहाँ पे प्लस माइनस कर देता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, सिमिलरली let me copy paste this, control C control V. This time I'll be going for minus plus plus minus. Similarly this time minus minus, यहाँ पे भी माइनस कर दिया मैंने. ठीक है, this is the entire code. Let me explain you clearly what we are basically doing. See, we'll be getting a number. Okay, suppose this is the input which I got from the user. Okay, this is the input. Now I'm splitting this input in form of this combination. Okay, 1-digit number and 2-digit number, 2-digit number, 1-digit number, 2-digit number, 2-digit number, 2-digit number, 1-digit number. Okay, this is how I'm making the combinations, and then I'm using these combinations for these operations. I'm adding two numbers, I'm adding and subtracting, subtracting and adding, and then subtracting based on this operation if it is equal to the value of V. Hence your answer is right. Okay, so let me run this. Let me see the examples what we have got. 87989, 87989, and the answer should be 7. So see, 87 plus 9 minus 89. Is this the answer which we should have? See, this is what we should have. Let me take this example also. 87 987. Okay, 176. ठीक है, तो कर लेता हूँ. Let me run this again. Let me run this again. What should I have? 179, right? अच्छा शायद 179 नहीं होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? 176 होना चाहिए था. कोई बात नहीं, इसे रन करके दिखाता हूँ. Control V 176. See, if you will add all the three numbers, you will get your answer. Okay, that is all what we have to do. Okay, it's a easy question. It's just ठीक है, बस यही करना है तुम्हें, बस नंबर लेना है, कॉम्बिनेशन बनाना है और ये सारे ऑपरेशन चेक करना है. That's all. Thank you.